pharynx या we say throat पे, these are pharyngeal pouches जाते हैं और gills में convert हो जाते हैं during in the fishes and amphibians. However, reptiles, birds and mammals, they will be connected with the nasal passageway later. अब कैसे देखिए, ये है एक डायग्राम आपको दिखाते हुए, मैं बहुत डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊंगी, बस just remember that the first pouch that is there, okay, that first pouch will be connected to the trachea tube or tympanic cavity, right? Second pouch to the palatine tonsil, then to the inferior parathyroid and thymus, superior parathyroid and ultimo branchial. Branchial means again connected with the breathing thing. Okay, तो ये सब जो connected है, ये आपके 5 pouches दिखा रहे हैं, right? 5 pairs of pouches जो कि reptile amphibians में होते हैं, लेकिन when we'll talk about birds and mammals, only 4 develop. Okay, fifth one जो होता है, that is always attached to the fourth pair. जो fifth one develop होता है, वो generally attached to the fourth pair होता है. ठीक है? First pouch हर जगह it will become attached with this most important is taken tube and the middle ear. But दूसरे जो होते हैं in reptiles, they all get reduced and they will disappear. ठीक है बेटा? In reptiles, have you understood? Pharyngeal pouches याद है ना बच्चे? Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, see, अब हम आते हैं respiratory system. What are the respiratory system and all? Now, remember, first of all, larynx. Most of the reptiles जो होते हैं, they cannot produce much sound except for hissing noise. कुछ lizards में guttural noise you can hear, very little. But जो आपके alligators में होती है, they have very huge bellowing sounds which comes from their larynx because they have well developed, and that comes during the mating season. So you can actually hear those noises. Okay, but as for snakes and all, they have only hissing noise. अब ट्रैकिया का बात करें तो shortest होती है lizards में और longest of course होगी, which are the longest reptiles, they are the crocodiles. उसमें longest trachea होती है. Snakes वगैरह में एक ही branch होती है, एक ही bronchus होता है और एक ही lung होता है, which is the right one. Okay, and turtles वगैरह में अगर आप देखें तो they are generally, convoluted trachea, most of them. अब मैंने आपसे बोला था they are the first land vertebrates, so lungs की अब respiration it is much more efficient than in amphibians. Okay, जो line of symmetry है snakes और lizards में, उसमें that will lack on both the sides. Sometimes snakes have a what are termed as left lung which is smaller and maybe even absent. जो crocodiles जो है, आप crocodiles की बात करेंगे तो even heart as well as lungs, they approach closest to the mammal. So when we talk about crocodiles, we see that the lungs they will have closest towards approaching towards the mammal. अब respiration क्या होती है? Most of the reptiles, just like amphibians, throat movements होगी, opening and closing of valves होगा, but क्योंकि इनके ribs है यहाँ पे, इसलिए and rib muscles हैं, they are able to carry out much better respiration as compared to the amphibians. अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली आपको टर्टल का दिखा रही हूँ. अब टर्टल में हम जनरली सोचते हैं कि इनका जो ऊपर का है बहुत हार्ड शेल है, ठीक है, तो अब ये एक्सपैंड कैसे करेगा, ठीक है, वो इस तरह करता है कि एक्सपेंशन इज ब्रॉड विद इन द थोरैक्स व्हिच देयरफॉर ड्रॉज द एयर इनटू लंग्स. ओके, और रेस्टिंग पोजीशन कब हो जाएगा? जब प्रेशर विद इन द थोरैक्स विल इंक्रीज and air will be forced out of the lungs. But remember, turtles generally undergo what is termed as coical respiration as compared to your lungs. Lungs की इतनी efficiency नहीं होती as compared because of the hard, skeleton. ऊपर जो उनकी बहुत hard scales जो बड़े-बड़े हैं, उसकी वजह से इनकी limited lung respiration है as compared to coical one. ठीक है बच्चे? Yes, right? अब हम आते हैं glands वगैरह की बात करते हैं. That is if you talk about what kind of subsystem, digest system की तरफ चल रहे हैं. तो snakes वगैरह में you have what are called as poisonous glands. You are all aware of it. And one only lizard which is poisonous is Gila monster. Okay, ठीक है?
That is the one which is the only lizard which is the poisonous. I think I have one photograph of it. ऊपर की तरफ नीचे I don't remember. Heloderma. मेरे ख्याल से है उसकी पिक्चर. I don't remember exactly where it is. Heloderma. I think it was moved. Yes, here it is. Okay, this is a Heloderma. This is what's called as Gila monster. And this is a poisonous lizard. Okay? वैसे lizards are not poisonous. Fine? Turtles and crocodiles में जो oral glands है, जो mouth में glands है, they are very poorly developed. Otherwise, in case of snakes and in case of lizards, they will be well developed glands. Otherwise, in case of turtles and crocodiles, oral glands are very poorly developed. ठीक है बेटा? Tongue. आप टंग की बात करें तो टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स की जो होती है प्रोड्यूसिबल टंग नहीं होती और फ्लोर ऑफ द माउथ मतलब नीचे की तरफ माउथ में इट जस्ट रिमेन्स देयर. स्नेक्स और लिजर्ड्स में दे हैव वेरी लॉन्ग वेल डेवलप्ड टंग एंड जनरली प्रीहेंसाइल मतलब इट्स डिवाइडेड इनटू टू. ठीक है? और ये कहाँ पे रहती है? इट व्हेन इट रिट्रेस बैक इट गोज इनटू द व्हाट इज टर्म्ड एज अ वोमेरोनोजल ऑर्गन, आल्सो कॉल्ड जैकोब्सन्स ऑर्गन. ओके, ब्लाइंड पॉकेट्स होते हैं उसके अंदर ये देखिए ये वाला ऑर्गन इट इज प्रेजेंट एंड ये क्या करता है? दिस जैकोब्सन्स ऑर्गन एक्ट्स एज एन ऑल्फैक्टरी डिवाइस. ऑल्फैक्टरी समझते हैं? स्मेल. तो क्या होगा? जैसे वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस है वो स्टिक कर जाएंगे टंग पे, देन इट गोज बैक इनसाइड, इट टचेस दिस जैकोब्सन्स ऑर्गन. ठीक है? और उससे आप वो ट्रेस कर पाएगा कि व्हाट इज दिस केमिकल, पैलेटेबल है कि नहीं है. Snakes and lizards they are able to do so. ठीक है? तो blind pockets of Jacobson's organ में it opens into the mouth cavity and when it retraces back its tongue, these chemical substances will be detected. These volatile chemical substances will be detected by these Jacobson's organ. Okay, ये बहुत well developed होता है reptiles में. ठीक है बेटा? अब teeth की बात करें, turtles are toothless, लेकिन उनकी हॉर्नी बीक्स सर्व एज अ टीथ. मतलब उनकी जो अपनी स्नाउट है उसमें टीथ, वो उसको टीथ की जगह सर्व करती है और सब में टीथ है. अब पॉइजन फैंग्स क्या है? मैक्सिलरी टीथ है. दे आर वेल डेवलप्ड मैक्सिलरी टीथ दीस वंस एंड दे विल गो आउट इनटू अ सॉर्ट ऑफ कैनाल. ओके, ठीक है? और ग्रूव ऑफ पॉइजन डक्ट है जिसकी वजह से भी इसमें टीथ में this poison, this duct से gland से इसकी जो duct है that will open into the fangs and they will give off their poison like this. और वही चीज गिला मॉन्स्टर में भी होती है. कुछ एक टर्टल्स है उसमें they have what is termed as egg tooth और epithelial tooth. ये क्यों होता है बेटा? टिप ऑफ द स्नाउट में जब एम्ब्रियो निकलना चाहता है बाहर एग से हैच करने के लिए, this egg tooth is used by it. Lizards की वजह से lizards या crocodiles they will use this and they'll break open it. Even in crocodiles they have that. Even turtles have that. So they will just break it open and come out. But उसके बाद ये shed off हो जाता है. ठीक है? This egg tooth or epithelial egg tooth which is called is at the tip of the snout of turtles and crocodiles, even lizards, and they will help the young one to come out of hatching. ठीक है बेटा? Right? All of you please respond. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. समझ आ रहा है ना बच्चे? मैं धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है. We can do it properly and understand each and every aspect. Then specimens देखा तो it will just take about hardly 10 minutes. Once you understand these things, it will be easier for you to understand the specimens also. Although they are not visible, but you should be aware of what kind of systems work in these reptiles. Okay? अब esophagus जो होती है, जो lower forms में है, जैसे जो fishes, amphibians से बड़ी है. स्टमक जो है ऑब्वियसली स्नेक्स एंड लिजर्ड्स पे कैसी होगी? लंबी होगी, स्पिंडल शेप स्टमक. ठीक है? क्योंकि उनकी elongated narrow body है. क्रोकोडाइल में ऑफ कोर्स रिमेंबर वन थिंग, दे हैव two stomachs almost and one of them is actually gizzard, has lot of gizzard like activity क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है अच्छी तरह. ठीक है?
और रेप्टाइल्स पहले वर्टिब्रेट्स हैं हुआ है पॉलिक सीके. So here ileopholic cecum and all this is for the first time present in reptiles. Okay, intestinal cecate जो होते हैं, that is sac-like structure in the intestine, small intestine, they are the first ones to be present. Fine, beta. So here's the comparison between turtle, pigeon, and man. You can see the digestive system. Now let us see how do they do the digestive system work. कैसे work करेगा? It depends upon what kind of food it will eat. Like meat eaters होंगे तो उनके छोटे से intestine होंगे. They don't require. We all know the vegetarians always have a longer and more complicated stomach, and long intestine. So crocodiles have large stomach because they have to chew the flesh. They will eat into small pieces. So large stomach and gizzard-like, which is able to break it well. Okay, beta. Now let us see kidneys, excretory system का क्या है? Urine is being produced which contains either ammonia या uric acid. तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा. Can you see the slide? Yes, ma'am. Okay. इसमें किस तरह से है? या तो यूरिया प्रोड्यूस होगा, सॉरी एमोनिया प्रोड्यूस होगा या यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा. एमोनिया उनमें होगा जो पानी पी रहे हैं. If you remember, even amphibians, they would be secreting out ammonia because they drink a lot of water. Okay? So crocodiles and alligators will have ammonia, whereas uric acid will be the one which would like to conserve water, which is spending more time in the pasty white solid will come out, like snakes, the lizards. अगर आपने उनके snakes का देखा हो या lizards की droppings देखी हो, तो they are very pasty like because they are remain more in dry condition. So they are not much drinking water, so they will have a pasty like. Okay. अब क्या होता है इनकी symmetry again depends upon the shape of the body. Remember one thing very important. Urinary bladder is lacking in snakes and crocodiles. There is no urinary bladder. Okay, they will not store it up. They will just release it out. So urinary bladder is absent in snakes and crocodiles. Okay, और जो lizards और turtles में होता है, bilobed होता है bladders and open directly into the cloaca. ठीक है, तो इसीलिए क्लोइका से कनेक्ट करता हुआ है, इसीलिए टर्टल्स में क्लोइकल रेस्पिरेशन पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि यूरेटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं टू द ब्लैडर. ओके, और इसमें ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में इट गेट्स फिल्ड विद वाटर. So what happens when it wants to make a nest on the ground? It will be able to soften it with the help of this water which is stored in there. ठीक है बेटा? ठीक है? Yes, ma'am. ओके, अब रिप्रोडक्शन पे हम आते हैं. इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन आ सकते हैं. इससे पहले हमने क्या देखी थी? एक्सटर्नल. अब जो भी एग्स ले डाउन होंगे उनमें शेल होगी, लेदरी शेल होगी. ओके, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड कीप्स इट फ्रॉम ड्राइंग. फ्लेक्सिबल भी है सो दैट गैस एक्सचेंज वगैरह भी है. Only some reptiles like the crocodile will look after their babies after they hatch. Okay, बेटा? ज्यादातर सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली भी. That's why reptiles make an ectotherms or depending on environment. Parthenogenesis मतलब asexually अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो parthenogenetically कर रहे हैं. That means they will not require sperm. So female when they lay down the eggs, depending upon the temperature of the environment, they may develop into females or males. There are very interesting videos on YouTube or Discovery Channel where you can see how temperature fluctuations will change the sex of the embryo that is being born from the reptilian eggs. That is why we say कि अगर आपका environmental changes होगा, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगा वो किसको करेगा? Those which are dependent on environment for reproduction, like reptiles. वो जल्दी वाइप आउट हो जाएंगे अगर हम इसमें ज्यादा greater fluctuations. ठीक है? So all reproductive activity occurs through the cloaca. Very important. Okay? So most of them will lay it on the ground. Some retain their eggs and let them hatch. कुछ जो होते हैं, some snakes like rattlesnakes and all give life to live young ones come out of it. Okay? ठीक है बेटा? तो किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है? स्नेक्स और लिजर्ड्स में सैक्युलर ओवरीज आते हैं. सैक्युलर ओवरीज का मतलब है sac like structure of ovaries. Okay, whereas in case of turtles and crocodiles there are solid ovaries.
तो एक तो सैक लाइक हो गई, एक सॉलिड ओवरीज हो गई, ठीक है। Eggs of snakes and lizards will lack albumin. Internal fertilization है, and testis is what is copulatory organ is there. It is not present in sphenodon, but however in snakes and lizards they have paired hemipenis, see, which can be inverted out. Internal fertilization है, so there will require penis is not homologous to that of the penis of the हर organism, but hemipenis, double, ठीक है। इस तरह से ये hemi means half, तो एक तरह से double like inverted structure comes out of it. So in case of snakes and lizards, they have hemipenis, which are sac-like structures, which lie under the skin adjacent to the cloaca. Okay, whereas in turtles and crocodiles, it's a single penis. समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. अब आप देखिए ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम है जिसमें क्रोकोडाइल आता हुआ दिख रहा है, निकलता हुआ, and this is how the crocodile baby looks like. This is a full yolky egg. This is a yolky egg where which it takes yolk and nourishment. This is the bag which covers it, amnion. This is the chorion, which is the outermost involved in the respiration. Yolk sac is another membrane by which it provides nourishment. And allantois is it also almost fills the whole reptile. And this is also a bag which actually carries the nitrogenous waste. सारा इसमें इकट्ठा हो जाता है. So these are the extraembryonic membranes. और ये शेल है जिसको ब्रेक करके, ठीक है, small सा tooth होता है, epidermal tooth से ये ब्रेक. And you can see it looks like a miniature crocodile. There's no metamorphosis as such. ठीक है बच्चे? अब हम लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वी कम विच इज टर्म्ड एज सर्कुलेशन. अगर हम देखें फिशेस का, देयर इज अ सिंगल सर्कुलेशन. In amphibian reptile there is a double loop circulatory system. We can remember one thing, this is much more efficient than amphibian reptile circulation. Why? Because although ventricle is again not divided, but there is a interventricular septum which is perforated. Okay, तो एक मतलब एक incomplete सा interventricular septum is there in most of the reptiles except in crocodile. crocodile में क्या हो जाता है, पूरा complete हो जाता है. ठीक है बेटा, तो दो तरह की सर्कुलेशन आ रही है. So that means remember one thing, in amphibians it is much poorly, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म भी पुअर है amphibians का. क्यों? क्योंकि उसमें पूरी मिक्सिंग हो रही है, इसमें इनकम्प्लीट मिक्सिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि एक सेप्टम इनकम्प्लीट प्रेजेंट है. अब देखिए कैसे है, ये देखिए, राइट. नाउ they cannot again maintain the temperature, but you can see that this ventricle septum, it is there. Yeah, this septum, it is incomplete, so there is some mixing of the blood. However, अगर हम इसकी बात करें डबल सर्कुलेशन की, one is going, see, this is the place where single ventricle is there, so the aorta is two sides, left and right. और इधर एक foramen peniza, that is foramen penizae is there, which is a sort of a a sort of a hole which is there, which actually leads to the mixing of the blood. That's why you can see a light purple one. That is, there's a mixing of the blood which occurs at the entrance where the two aorta will bifurcate. But one which goes towards the lungs is all pure, and one which then carries on the mixing blood to the systemic one, and then finally the deoxygenated blood comes back to the right atrium. ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह आपको डिफरेंस दिखाएगा single circulation and double circulation. Can you see that fishes, amphibians, reptiles and birds and mammals? Yes, ma'am. दिख रहा है बच्चे? Yes, ma'am. तो इसमें क्या दिख रहा है बेटा, ये रहा आपका सिंगल सर्कुलेशन. From the body, the blood is going to out auricles to ventricles, again single है, and gills से gills की तरफ जाता है, oxygenated हो जाता है, इस तरह से it keeps on moving. ठीक है. Now we come to amphibian. From right atrium it goes to ventricle, then it goes to lungs and body. ठीक है, lungs में oxygenated होके left ventricle पे आ गया, from ventricle again there is a mixing of the blood here because there is no septum here. However, here there is incomplete septum, so not complete but slight mixing is there, much more efficient than amphibians. Okay, most of the reptiles. Only crocodiles reach this
where there's complete interventricular foramen. ठीक है, ठीक है, सेप्टम जो है कंप्लीट है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, अगेन यू कैन सी द राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया एंड देन कम्स टू द बॉडी as well as from body the oxygenated blood is going, the slight mixing of it, body से जाके जो deoxygenated blood है it goes back to the right atrium. Right atrium again is going to the ventricle and then going towards the lung to get oxygenated, which comes back to the left ventricle. ठीक है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है, which you can see, you can make out the difference. Here there is too much mixing of blood, here there is less mixing of blood. ठीक है, मिक्सिंग हो रही है लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो रही है एम्फीबियंस में, यहाँ पे कम हो रही है क्योंकि एक सेप्टम बन गया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सिंगल वेंट्रिकल है. ठीक है बेटा, और ज्यादा डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए डबल सर्कुलेशन है और कितना डिविजन हो रहा है वेंट्रिकल का. Crocodile की circulation it reaches almost close to that of the mammals and birds because it's a complete one. Okay, Yes, ma'am. we come to poisonous snakes of India. You have the Indian cobra, common crate, viper, and different kind of vipers. अगर हम पॉइजन की बात करें तो दो तरह के पॉइजन होते हैं, एक हीमोटॉक्सिक which affects the blood, okay, and एक न्यूरोटॉक्सिक which affects the nervous system. तो किंग कोबरा जो आपके उसमें है नाजा, that is actually a neurotoxic one. Okay, python which we think like that, actually a non-poisonous. ठीक है, hemotoxic में आपका आता है वाइपर, pit vipers and all which is there in your pores. ये आपके नॉन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के आपके डिफरेंसेस हैं which we'll do later. Let us come to now snake venom कैसे करता है. See, actually there are around 300 species of snakes in India, but unlike what we think, actually only 20% are poisonous, rest are non-poisonous. Fangs मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी, मैक्सिलरी टीथ के होते हैं, and poison glands are modified parotid salivary glands. Okay, ठीक है. स्नेक वेनम जो होता किस चीज का है, सलाइवा जो है वही मॉडिफाई हो जाता है, और वो क्यों बनता है, so as to immobilize and digest the prey. It's not meant to actually harm us. They use it as a defense mechanism against the predator. Whoever they will think as a predator, they will like to put their venom. तो enzymes और proteins दोनों का mixture है venom. It is tasteless, odorless and acidic in nature, and when it mixes with the blood, very important, then only it is fatal, because उसको hemotoxic के लिए भी mixing of blood is important, and to reach the nervous system also it needs to go by the blood and then affect the nervous system. So hemotoxin affects the circulatory system by damaging blood vessels and hemorrhage, and neurotoxin affects the nervous system and causes death by paralysis of the respiratory system. Okay, ये मैंने आपको दिखाई थी हिलोडर्मा. अब मैं आ रही हूँ बेसिकली नाउ ऑन टू द क्लासिफिकेशन. ओके, प्लीज नो, class reptilia, it is divided into many of the extinct